check.
Everyone present in the hall is requested to take his or her respective seat. Kindly switch off your mobile phones or put them on silent mode. Important announcement for the recipients. They are supposed to, after the end of the session 1, they're supposed to collect their degrees from their respective stalls, from where they collected their stools. And after lunch, they will be gathering in the open ground next to the hall for photo session with the Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor. Hello. The program Hello, shall hello. begin soon. Important instructions for all. When the academic procession enters the convocation hall, you're requested to rise and remain standing till all the members of the academic procession have reached their respective places, and the national anthem thereafter. Hello. 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 Hello.
I request everyone present in the hall to take their respective seats. Hello. Hello, hello. 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 Everyone present in the hall is requested to take his or her respective seats. Kindly switch off your mobile phones or put them on silent mode. थोड़ा दूर होके खासना मेरे को माइक में आवाज वहां जाएगी. Our chief guest is about to arrive. I request everyone present in the hall to take their respective seats. Important instructions for everyone. When the academic procession enters the hall, you are expected to rise and remain standing till all the members of the academic procession have reached their respective places. अच्छा अगर वो कौन कौन आए हैं present हैं, वो मुझे दे देंगे तो
बता रखा है हाँ डॉक्टर बीच मेरे को बता देंगे आप खाली मेरे को एक बार अंदर दे दो Everyone present in the hall is requested to take their respective seats. Everyone present in the hall is requested to take their respective seats. The chief guest has arrived, and very soon the academic procession will enter the hall. All of you are instructed to rise and remain standing till all the members of the academic procession have taken their seats. I request everyone to take their respective seats. It is on the left.
I request everyone to take their respective seats. The chief guest has arrived, and very soon the academic procession shall enter the convocation hall. I request you to switch off your mobile phones or to keep them on silent modes. I request everyone to take their respective seats. Movement shall not be allowed during the academic procession. Uh, I request everyone present in the hall to take their respective seats. The academic procession may enter the hall anytime now.
I request everyone present in the hall to take their respective seats, please. The academic procession has entered the Convocation Hall. May I request everyone to please rise and keep standing till all the members of the academic procession have reached their respective places, and the singing of national anthem thereafter. Hello. Hello, hello. I request everyone to keep standing for the national anthem. I request everyone to take their respective seats. May I have the honor of requesting our Chief Guest, Lieutenant General Gurmit Singh Ji, Hon'ble Governor of Uttarakhand and visitor of our university, to light the lamp of convocation ceremony.
I request the students to present the Kulgeet of the university. जयति जयति कुल भूमि महान, स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित्य कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान। गंगा सी पाए निर्मलता, गंगा सी पाए निर्मलता, देव भूमि की मन में ममता, देव भूमि की मन में ममता, जन जन का हो कुल भूमि महान। जयति जयति कुल भूमि महान। स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित्य कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान। यंत्र कुशलता कर्म हमारा, नित्य विकास हो धर्म हमारा, यंत्र कुशलता कर्म हमारा, स्वस्थ राष्ट्र हो मर्म हमारा, स्वस्थ राष्ट्र हो मर्म हमारा, धरा बने स्वर्ग समान। जयति जयति कुल भूमि महान। जयति जयति कुल भूमि महान। स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित्य कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान। आएंगे जो जग में तपने, स्वामी राम हो प्रेरक अपने, आएंगे जो जग में तपने, स्वामी राम हो प्रेरक अपने, पूर्ण करें हम उनके सपने, पूर्ण करें हम उनके सपने, उनका चिंतन लक्ष्य महान। जयति जयति कुल भूमि महान। जयति जयति कुल भूमि महान।
स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान। जागृत हो जन जन का चिंतन, रोग मुक्त हो तन मन जीवन, जागृत हो जन जन का चिंतन, रोग मुक्त हो तन मन जीवन। देव भूमि हो सुख में पावन, देव भूमि हो सुख में पावन, मिले यही मंगल वरदान। जयति जयति कुल भूमि महान, जयति जयति कुल भूमि महान। स्वामी राम का अमृत चिंतन, स्वामी राम का अमृत चिंतन, करे जगत का नित कल्याण। जयति जयति कुल भूमि महान, जयति जयति कुल भूमि महान। जयति जयति कुल भूमि महान। I, Dr. Rajendra Dobhal, Vice Chancellor of this university, takes a distinct privilege to request the Honorable Chancellor, Dr. Vijay Dasmana, to declare the 6th convocation of this university open. I declare the 6th convocation of Swami Ram Himalayan University open. May I request the Honorable Chancellor Dr. Vijay Dasmana ji to felicitate the Chief Guest, Honorable Lieutenant General Gurmit Singh ji, Governor of Uttarakhand. May I request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajendra Balji to felicitate Shri Shailesh Bagolji, Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttarakhand. I request Honorable Vice Chancellor Dr. Rajendra Balji to felicitate Honorable Chancellor of the University,
Dr. Vijay Dhasmana ji. I now request the Honorable Vice Chancellor of the University, Dr. Rajendra Dobhal ji, to deliver the welcome address. A very good morning to you all. I welcome you all in the 6th convocation ceremony of this prestigious North Indian University. First of all, I extend my warm welcome to Lieutenant General Gurmit Singh ji, who is ultimately the proprietor of all private universities. I had a privilege to visit him a couple of times in the Raj Bhavan and many other programs. And one thing I very much liked about him is a very bold in his speaking and expressing his words. Number two, he considers private university as a self-financed university and gives a considerable importance to the private university. And having my decades of experience serving to the government, I found the kind of manpower and the quality of work in these universities is far higher. And therefore, I found in my career the first person who recognizes such things. So very warm welcome, sir. This happens to be probably your first visit to our university campus, and I wish if you find a little time sometime during the winters, a good place and very blessed land here, to visit the Swamiji's ashram here, his literary work, his creations, and all about him. We have converted this into the museum, and it's open for all. I also invite our distinguished guests to visit the place. And we are all here due to his blessings. Sometime I never thought that I will be here. Never ever in my life thought I will be here. But I consider perhaps it was his order to me that you must be here. I have a distinct privilege again to welcome one of my best friends in the government, Mr. Sailesh Baguli. By career, he's a chemist from IIT Kanpur. And we have a friendship right from 2005. I joined as a director here in the science technology. And he was CDO Gopeshwar by that time. Since then, he had been district magistrate of Haridwar, Nainital, officiating probably in Chamoli also, Bageshwar. And today he is the Secretary of the Department of Higher Education, but also the Information Technology, Science and Technology. And he is Secretary to Chief Minister also. Along inter alia, he has a lot of departments at his disposal, but he is son of the soil and one of the topmost and the honest bureaucrat of our state. When I asked him, we probably a few months back we met, and I said him, come to our place sometime. He said, मुझे यार hospital मत ले जाना, मैं बहुत डरता हूँ. So I rest assured that this is not the hospital complex. It's opposite to the hospital complex. So you are safe here. Our dynamic Chancellor, who drove this boat from turbulent times to peaceful times, right from 1996, when he was 26. One thing I admire about him is whenever I'm in the topsy-turvy, I ask him what to do. He knows everyone's horoscope very well here.
So I, so I ride very, smooth bus here. So thank you very much. You are my guest today here. We have very distinguished board of governors, Dr. Saini, Dr. Oberoi, Mr. Oberoi, Professor Norial, who happens to be my teacher in Pori from IIT Roorkee, Dr. Prakash, Sushila, who is our registrar, and we have very distinguished people sitting, back to them, right from Mr. Avasthi, Sahai, Dr. Devrari, Justice Garola, Maithili, and the principal of the Nursing Sanchita, and Sanjay Gupta, he is the principal of Biosciences. Distinguished academic council who is sitting well dressed opposite to me. My guests, especially the various vice chancellors that I am seeing, Mr. P.P. Dhyani happens to be senior to me, the vice chancellor for probably years together. Currently is the vice chancellor of the Haridwar University along his wife. We have Dr. Surekha Dangwal, who is the vice chancellor of the Doon University, and Dr. Jiyal, who was the vice chancellor of the Jabalpur Agriculture University, a very good friend of mine, the member of the academic council of the university. Distinguished teacher fraternity, students, and young ladies and young students who are getting their laurels today. Ladies and gentlemen, I also take this privilege to welcome our promoting society, HIST, and all other people who are involved directly or indirectly, especially from the various members here who are sitting here are from the foreign land, and they are as good as now Indianized and served to this institution with all, following the all principles of the Swamiji, who gave us the principle of to serve the mankind with utmost honesty. That's probably the buzzword of this land. And we are, generally speaking, not very commercial. We serve to the people and we care for the people, and I will explain in my later address how we serve to the people. Friends, this is the university comprising of 4,500 employees, nearly 400 plus faculties. Out of them, 112 are of the professor level. So very big system here, followed by dozens of associates, professors, associate professors, assistant professors, lecturers and demonstrators who are involved in the teaching. Plus, we have 7 institutions which imparts upon the top class quality education with values. These are called Himalayan Institute of Medical Sciences. Ultimately, the hospital falls under the paradigm of the medical college. And we have one additional unit with the hospital called Cancer Research Institute, for which Dr. Saini is the director. We have Institute of Biosciences. We have Institute of Management Studies. We have Institute of Pharmacological Studies, Engineering College. We have Nursing, and we have Yoga. And we contemplate that in future, we are going to have some more institutions in next financial year, and we are trying to get it. But I am very happy to inform the chief guest, because it's a very few occasions that you listen to us. So I will leave no stone, to apprise about the university, sir. We have very renowned people. For example, I begin with the library, for example, is sitting Dr. Yogen Singh.
is the only librarian I have seen so far in our country who is a Fulbright fellow and is then therefore considering his laurels, university has decided to give him a rank of professor of practice. We have Dr. Prakash sitting here. And Dr. Prakash is basically an IITian, went to US and designed his own machine on nephrology. We called it dialysis machine. And this dialysis machine is now in the making by the BEL. Now, think about the depth of people who are serving here. We have Dr. Nautiyal sitting here, he is the advisor in the biosciences. He was the director of as many as 3 national institutions of CSIR, fellow of all 3 Indian science academies, and Sir J.C. Bose fellow also is with us. We have Dr. Bindu De, who was the advisor, senior advisor in the Department of Biotechnology, Secretary Technology Development Board, and now she heads research here, and we have made him a director research. We have Dr. Amjad sitting just opposite to, left to Dr. Bindu De. He is a Harvard alumni. We have put him here for developing the entrepreneurship and the startups ecosystem, to create the startup ecosystem. And he was serving as a vice president and also in the Biocon in the Bangalore. And I requested him to come to our place. And he very kindly agreed to be here. I'm sorry I forget to name our MLA, Mr. Brij Bhushan Gerula, because I saw him for the first time. I'm sorry, sir. We have very eminent surgeons here. For example, Dr. Sunil Saini. He is the renowned cancer surgeon, and the Cancer Research Center here is the North Indian Referral Center. And we are proud of him and his team. We have a top-class departments of neurology, cardiology, radiology, neonatology. We have Dr. Deviradi here, who spent his 46 years in AIMS, 47 years in AIMS, and he is the known international neonatologist. And he is here as a capacity of the principal, and I think under the mentorship of such top-class people, our students are bound to be top-class in future. We have a very good orthopedics department led by, sitting there, Dr. Chauhan, and a very good team of surgeons out there. And he is there Dr. Sen is here for last 30 years. He came with Swamiji itself and devoted their entire life to this campus. Now we have a very good ophthalmology world-class department. Dr. Renu Dasmana is sitting here. She looks young, but she is quite fairly experienced surgeon. And I generally suggest people don't go to Delhi to check up your eyes. I see many senior people going for eye checkups to Delhi. And I suggest them come here and go after 1 or 2 hours with top-class treatment. We have performed renal transplant here, bone marrow transplant here, and we propose in the future the liver transplant and other kind of surgeries. We want to make it one health, as our Honorable PM says. One health kind of thing. We have Ayurveda, homeopathy here. Ayurveda center we are here, just opposite to you. We have homeopathy system here. We have Ayurvedic doctor here. We have entire system of allopathic treatment. We have yoga institute also. So as per the NMC, and Dr. Devradi is taking the initiatives along with the experts from the AIMS Delhi, we are going to create an integrated Department of Integrated Medicine, whereby we will have a team of experts coming from all sciences,
including Ayurveda, yoga, homeopath, and whatnot, and allopath. So we are beginning with a couple of departments, cardio, tuberculosis, and probably with the cancers also in the holistic medicine, because in such diseases only one science doesn't work. This is generally people say. So therefore we are creating this, and I hope that coming couple of months you will see that we are creating this department. So we have 100 laboratories here in this university, top class library, and we create professionals, undergraduate and PGs for MBBS, MD, MS, DM, MCH, nursing, paramedical, engineering, management, biosciences, yoga and pharmaceutical sciences, and also PhDs. Now we have a distinct, very remote center near Satpuli called Toli, where Swamiji came from. In Toli, we have an institute for the local people, and I am happy that entire Toli students are today we have invited here. In the, in the remote hill areas, they hardly see the opportunity to attend such programs. And therefore, we have invited them here, and we give them the top class education. The faculty recruit here, we recruit here, and some of the faculty goes there. A laboratory exposure, we also give them here also. And we have a Rural Development Institute, just we were asking you to view that. And Ms. Mathli is sitting here, she looks after this. And we do a lot of work in nearly 2,000 plus villages in the hills and in other places, try and test various proven technologies out there, and we are lead in the health, water, health and sanitary areas, and we are recognized, our RDI is recognized by the central government's many departments like Water Resource, Jal Shakti we call it now, and Rural Development Ministry. And recently we are coming up with a very big project from ICMR, which jointly will be operated by the Community Medicine and the Rural Development Institute. So that's our, Rural Development Institute. We are launching, we have already launched a big research and development program, which I have said Dr. Bindu Dey is steering. And we are developing a startup ecosystem here. We will ask our students to develop your technology here, try here, test here, earn here, and develop your own area. That's our model for entrepreneurship. And particularly, I am visualizing another institute coming sometime next year, is Integrated Institute of Himalayan Development here. We have already done the exercise, in which we are working on 18 sectors, including water, sanitation, energy, migration, agriculture, horticulture, all kind of, we have identified 18 sectors. So we will be opening this institute, and then in tandem with the medical college, especially the community medicine and its expertise and other faculties and the Rural Development Institute, we will give the further boost to the Rural Development Institute. We have a state-of-the-art still and simulation laboratory here. You must see that this is one and only kind in the northern India when we train our nurses in the models. And our nurses are trained in 2 tiers. Number 1, under the skill development, where you see the live, almost live models. And then they are given the exposure of the hospital. You will see the other private, the self-finance universities are also doing the nursing, nursing students training, but they don't have such labs and such hospital facilities. So therefore, whenever the government opens up the opportunity for recruitment of the nurse, our hospital is literally vacated. And I had to accept sometime 100 plus resignation en masse. I asked why you are leaving. They say, sir, we are selected in the government jobs, because they know that the efficient nurses are coming from, not only nurses, but doctors are coming from this institute.
We have started the clinical research center and the trial center. So we are working with the multinationals and trying the various cutting-edge drugs, which is approved by the FDA and Government of India, and various departments are already trying, and we have a very well and developed clinical trial center. We are very high in publishing. We are touching 2,000 figure in the cited journals, and we are producing fair large amount of thesis and PhDs. Some of them you will be giving the honors them today. And most of all, we are first in the country in executing the Ayushman cards. So that's the another feather on our cap. And this medical college is also recognized by the National Medical Council for imparting medical education to the medical faculty of nearly 30 medical colleges. So 30 medical colleges comes here routinely for the training. So this is another very, and one a very new initiative that we have taken. We have started the annual lecture series. And the first annual lecture was, we invited a Nobel laureate, Mr. Aaron from Israel. And he came sometime in March here, stayed here for 3 days, and we are now trying to collaborate with him in protein degradation and in the cancer research. So first, I think in the history of this state, a Nobel laureate lands in a university and express his happiness and interest to pursuing research of his area in our university. So we have begun with the Nobel laureate. So I hope in future we can see many laureates coming from this place, if at all he mentors and the mentees are agree to be mentored efficiently. Now, we have started a new diploma course in clinical psychology. I'm taking much of time, but I will take only couple of times. We have started super specialty program that's called MCH in urology, DM in neonatology, PG medical program, MD immunology, hematology, and blood transfusion in the Himalayan Institute of Medical Sciences. We are giving a lot of fellowships, lot of charities, and we have given last year approximately 2.6 crores financial assistance was given to in the form of scholarship and the fee concession. And last 5 years, the figure goes to 75 crores. And for poor people, we have supported nearly 786 poor students. We have many things to, but it will take time. But as you know, you have already given shown the green flag to the National Intensive Care Unit in the neonatology from the Raj Bhavan. And we have a fairly good placement of the students. And we have, to top all, this is a very green and clean campus, smoke-free and everything, very pious land. And finally, to my students who are passing today, you will see that in future, who are passing and taking their laurels and baccalaureate today, you will see a lot of turbulent period in your lifetime. We have also seen who are sitting on the dais and who are sitting first in the second rope of this function. In future, you will be sitting here. And you will feel turbulent times, and what I see in today's society, they are less tolerant. They can't cope with the kind of tense period that we have suffered. Now world is in liberalized global economic scenario. World is open to you all, and you have to prove yourself. Never follow anyone. Have your own model. Have a good top-class mentor who can grind you, who can carve you, who can turn you in a good shape.
And I recall one of the lecture by a famous industrialist in IIT Roorkee. Sometime I was there in the convocation. And he said, I still recall his words, that my dear children, whenever you are frustrated, you are not successful. I was also not, I was frustrated, I was not successful. My project ran in rough weather. I wrote all my frustration on a paper many times, tore the papers and threw in the dustbin. And then I was fresh. So you will find such time in your lifetime. You will be frustrated, no doubt, and you have to. Since if you are in a long travel, in a long journey, you will see all kind of turbulences, all kind of high and lows. But ultimately you have to travel to your destiny. So therefore, don't be afraid of anything. Don't go to any hookah bar. Don't take any, aid which is harmful to your society and for your health. So I wish you all the best, very best in the future. I apologize, I take little more time. Thank you very much. I wish you best. Thank you. Thank you, sir. The Honorable Chancellor will now administer the oath to the degree recipients. All the degree recipients are requested to please rise from their seats. सभी डिग्री लेने वाले खड़े हो जाएं प्लीज. डिग्री रेसिपिएंट, ऑल डिग्री रेसिपिएंट प्लीज. I will solemnly pledge myself to the service to humanity. I will do so, please. जरा जोर से बोलिए. Thank you. Under any circumstances, I will not use my knowledge contrary to the laws of humanity. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party, politics, or social standing to intervene in serving the humanity. I will act with utmost honesty, integrity, and relentless commitment. I will practice my profession with conscience and dignity. I will strive towards the protection of Mother Nature and will use my knowledge and skills for the well-being of society and for the progress of our beloved nation. Thank you. The degree recipients are requested to take their respective seats. May I request the Registrar, Dr. Sushila Sharma ji, to present all the recipients of degree to the Honorable Chancellor. Honorable Chancellor, sir, I have the honor of presenting 644 candidates for the award of degrees of Doctor of Philosophy, Postdoctorate Fellowship, Doctor of Medicine, Master of Surgery, Master of Science in Nursing, Master of Hospital Administration, Master of Physiotherapy, Master of Science in Clinical Research, Master of Science in Epidemiology, Master of Science in Biochemistry, Master of Science in Biotechnology, Master of Science in Microbiology, Master of Business Administration, Master of Computer Application, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Bachelor of Science in Nursing, Post-Basic Bachelor Science in Nursing, Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology, Bachelor of Optometry, Bachelor of Physiotherapy, BSc Medical Technology Laboratory, BSc Medical Technology Operation Theatre, BSc Medical Technology Radiography and Imaging, BSc Medical Technology Radiotherapy,
Bachelor of Science Honors in Biotechnology, Bachelor of Science Honors in Microbiology, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Commerce Honors, Bachelor of Computer Application, Bachelor of Technology Civil Engineering, Bachelor of Technology Computer Science and Engineering, Bachelor of Technology Mechanical Engineering, and Bachelor of Science in Yoga Science and Holistic Health. Candidates in person 380, candidates in absentia 264. They have successfully completed their respective programs and have been found eligible to award their respective degrees. I request you to please award their respective degrees to them. All the degree recipients are requested to please rise from their seats. By virtue of the powers vested in me as the Chancellor of Swami Himalayan University, I confer upon you your respective degrees. I order you that you should prove yourself worthy of the same. I also authorize you to wear the stoles ordained as the insignia of the degree. I request the degree recipients to take their seats. May I now request the Registrar, Dr. Sushila Sharma ji, to present the recipients of PhD degrees, awards, and medals before the Chief Guest, Honorable Lieutenant General Gurmit Singh ji, Governor of Uttarakhand. Honorable Chief Guest, sir, I have the honor of presenting recipients of PhD degrees, medals, and awards of the university. May I request the Honorable Chief Guest, sir, to please honor the recipients with their respective degrees, medals, and awards of the university. PhD degree recipients: Dr. Sunil Madan, Doctor of Philosophy, Marketing Management. Dr. Pooja Thakur, Doctor of Philosophy, Nursing Sciences. Dr. Sonia Rani, Doctor of Philosophy, Nursing Sciences. Dr. Lekha Bist, Doctor of Philosophy, Nursing Sciences. Dr. Anshika Arora, Doctor of Philosophy, Oncological Sciences. Recipient of Dr. Swami Rama Best Nursing Graduate Award, Ms. Harshita Chauhan, BSc Nursing, Best 2018. Recipients of gold medals in various programs. Again, Ms. Harshita Chauhan, BSc Nursing, Best 2018. Ms. Tania Rawat, Post Basic BSc Nursing, Best 2020.
Ms. Srishti Agarwal, MSc Clinical Research, Batch 2021. Ms. Sanjoli Arya, Master of Physiotherapy, Batch 2021. Ms. Ramsha Khan, BSc Technology, Medical Technology, Radiotherapy, Batch 2019. अरे रामचंद्र, आप थोड़ा जल्दी करा रहे थे, मैं तो धीरे बोल रही हूँ. Ms. Parminder Kaur, BSc Medical Technology, Operation Theatre, Batch 2019. Ms. Jyoti Rawat, BSc Honors Biotechnology, Batch 2020. Ms. Saloni Chhabda, BCom Honors, Batch 2020. Ms. Srishti Kashyap, Bachelor of Business Administration, Batch 2020. Ms. Akriti Norial, BSc Yoga Science and Holistic Health, Batch 2019. Thank you, sir. May I now request the Honorable Chancellor Dr. Vijay Dasmanaji to bless the recipients of degree, awards, and medals. आप सबके अंदर निहित परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपने हृदय की गहराई से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हमारे राज्य के सम्मानित राज्यपाल जी व हमारे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री शैलेश बगोली जी
वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, मेरे कलीग जो शुरू से 1993 से 94 से इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सदस्य अध्यक्षीय समिति के सदस्य भी, और इस समय डायरेक्टर जनरल एकेडमिक डेवलपमेंट जो देख रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र चौहान, हमारी प्रमोटिंग सोसाइटी के सभी सदस्य, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल के सभी सदस्य, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, डिग्री रेसिपिएंट, ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, फैकल्टी, स्टाफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले विश्वविद्यालय के जिन छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है, मेडल मिले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके रिलेटिव्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको ये डिग्री ऐसे संस्थान से मिली है जो एक महान संत की कर्मभूमि है, और इस संस्थान की बुनियाद गुरुदेव की फिलॉसफी देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातना, नर सेवा नारायण सेवा। इस संस्थान से निकल के अब जब जाएंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक डॉक्टर के रूप में, एक नर्स के रूप में, एक पैरामेडिक्स के रूप में, एक योगा थेरेपिस्ट या योगा साइंटिस्ट के रूप में, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, जिस क्षेत्र में आप सेवा करें, तो गुरुदेव की जो फिलॉसफी है ये आपके जीवन का अंग बने। इस संस्थान का, इस विश्वविद्यालय का मोटो लव, सर्व, रिमेंबर। प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू सर्व विद लव। ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत नहीं। शिक्षा का अंत नहीं होता है, जिंदगी भर आप सीखते रहते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूं जो लास्ट एक्सपीरियंस लाइफ का होगा, जब सांस छूट रही होगी, उस समय भी इंसान कुछ सीखता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस हम शेयर नहीं कर सकते। अपनी सीखने की इच्छा को, अपनी सीखने की लालसा को कभी कम मत करना। मैं कभी कभी अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचता हूं, उस घर को भी देखता हूं जिस घर में पैदा हुआ, उस गांव को भी देखता हूं, और फिर गुरुदेव की कृपा से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया उसे भी देखता हूं। कभी कभी उस चिमनी को भी देखता हूं। अब चिमनी फैक्ट्री वाली चिमनी नहीं, वो चिमनी जला के जिसमें हम पढ़ाई करते थे, मैं पढ़ता था, उस लैंप को भी देखता हूं, उस लालटेन को भी देखता हूं। कहीं तो कोई कृपा है, कहीं तो कुछ है। 90 में गुरुदेव के मिशन को ज्वाइन किया और आज कुलाधिपति हूं विश्वविद्यालय का। इसमें मेरे सहयोगियों का बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर चौहान का, डॉक्टर प्रकाश का, डॉक्टर सैनी का। जब कुछ नहीं था यहां, गुरुदेव चले गए थे, मैथिली का, तब इस संस्थान को धीरे धीरे हमने बढ़ाया। आपको विश्वास नहीं होगा, जीरो लोन, जीरो लोन। हम लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेना है। लोन लेंगे तो हम जेब काटेंगे, जेब नहीं काटनी किसी की। ये गुरुदेव का मिशन है, इसलिए हम लोन नहीं लेते। धीरे धीरे इकट्ठा किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। जो ग्रेजुएट आज डिग्री लेके जा रहे हैं, मैंने भी जीवन में उतार चढ़ाव देखे। ये संस्थान आज ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ है। कभी रात को नींद नहीं आती थी। समस्याएं आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी। खुशी भी आएगी, दुख भी आएगा। अटक मत जाना एक जगह। बहुत खुशी है तो बहुत खुश मत हो जाना, पल में सब कुछ बदल जाता है।
सुख और दुख मन की स्थिति है। इमेजिन कीजिए जो 41 मजदूर पिछले 12 तारीख से सुरंग के अंदर बंद हैं, उनकी मनस्थिति क्या होगी? वो भी गहरे दुख में होंगे, लेकिन मन ही मन में कह रहे होंगे वो सुबह कभी तो आएगी। 1958 की एक मूवी है, फिर सुबह होगी। उसकी चंद लाइनें बहुत सुंदर हैं। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। कभी दुख हो तो हार मत जाना, हार मत मान लेना। 2 हथियार अपने पास रखिए, धैर्य और परसिवियरेंस, दृढ़ता। धैर्य से बड़ा हथियार, हर इंसान के अंदर धैर्य होना बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में जब आप कठिन पलों में होंगे, कृपया धैर्य मत खोना। कोई आपकी तारीफ करे तो सावधान हो जाना। चापलूसों की फौज होती है तारीफ करने के लिए। जब मेरी कोई तारीफ करता है, मैं देखता हूं पहले तारीफ क्यों कर रहा है। तारीफ अच्छे काम के लिए हो तो कूद जाना। जामवंत जी ने जब हनुमान जी की तारीफ करी, सीखिए, आपका राम में विश्वास हो ना हो, ये जो किताबें हैं हमको सिखाती हैं। तो जामवंत जी ने तारीफ करी एक टीम वर्क के लिए। एक विशाल कार्य, एक ऐसा कार्य करना था, अपने टीम मेंबर्स की तारीफ भी कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति साथ में रखिए जो आपकी बुराई करे। कोई द्वेष से आपकी बुराई कर रहा है, कोई कंपटीशन से बुराई कर रहा है, तो वो बुराई तो अहंकार की बुराई है। लेकिन ऐसी बुराई, ऐसा क्रिटिक जो आपको ठीक करे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। वो बिना साबुन पानी के आपके स्वभाव को ठीक कर देगा। एक क्रिटिक साथ में होना बहुत आवश्यक है। प्लीज वॉच योर डाइट। डाइट का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किस संगति में हैं, बहुत मैटर करता है। इस संस्थान से आप जा रहे हैं जहां हमें चैरिटी करने होती है, हम चैरिटी भी करते हैं। चैरिटी को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना। 10%, कोई जरूरी नहीं है पैसे से करनी है। और उस चैरिटी करने के बाद भूल जाना। अगर आप उसको याद रख रहे हैं, अगर आप उसके बदले में कुछ चाह रहे हैं, तो चैरिटी नहीं, व्यापार है। जब आप चैरिटी करें, भूल जाइए। जो डिग्री आपको मिली है, आपकी मेहनत की डिग्री है, लेकिन इसमें बहुत लोगों का योगदान है। आपके पेरेंट्स का है, आपके सगे संबंधियों का है, भाई बहनों का होगा। जिन मरीजों पे आपने सीखा है, उनका योगदान है। जिन सफाई कर्मचारियों ने आपके डिपार्टमेंट को साफ रखा होगा, जिस अटेंडेंट ने डिपार्टमेंट को बना के रखा होगा, जिन एग्जामिनर्स ने आपका एग्जाम लिया होगा, वो माली जिन्होंने ये फल, यहाँ फूल के पौधे लगा रखे हैं, इस कैंपस को सुंदर बना रखा है, सबके जो उनका योगदान आपके उसमें रहा है, उसको याद रखिए। मैं बीच बीच में स्टूडेंट के बीच में घुस जाता हूं, उनसे पूछता हूं कि जो आपने फीस दी है उसके बदले में आपको प्रॉपर शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं पूछता हूं बच्चों को कि पढ़ाई में क्या कमी है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और इसीलिए मैंने एक सेपरेट ईमेल क्रिएट कर रखा है चांसलर का, लेट योर चांसलर नो @srhu.edu.in। उसमें बच्चे अपना सुझाव भेजते हैं। और जो ग्रेजुएट आज यहाँ से अपनी डिग्रियां लेके जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब तो आप फ्री हैं, आप अपने सुझाव दीजिए। इस विश्वविद्यालय को हम कैसे अच्छा विश्वविद्यालय कर सकते हैं,
ये आपका एल्मा मीटर है, विश्वविद्यालय का नाम होगा, आपका भी नाम होगा। जब पुराने स्टूडेंट मिलते हैं वो बोलते हैं सर आपने सख्ताई तो खूब करी हुई है, 95, 96, 97, 98 बैच के बच्चे जो मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं जो यहाँ से सीख के गए वो उनके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी रहा है। आज आपके इस दीक्षांत समारोह में बड़ा अद्भुत मंच सजा हुआ है। ऐसा ही मंच 2005 में जब हमारा एक कॉन्वोकेशन था तब सजा था। आज मंच में एक तरफ विजेंद्र हैं, दूसरी तरफ राजेंद्र हैं। ठीक सेंटर में गुरमीत, गुरु के सखा, गुरु के सहयोगी, गुरु के साथी, और शैलेश। शैलेश का मतलब आप जानते हैं, पर्वतों का राजा, हिमालय। और जहां गुरुमीत हैं, जहां विजेंद्र हैं, जहां राजेंद्र हैं, जहां शैलेश हैं, वहां विजय होना स्वाभाविक है। आप सबकी विजय हो, जो आज जिनको आज डिग्रियां मिली हैं, आपकी विजय हो, आपको हार का मुंह न देखना पड़े। आप अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद। I'll now request Honorable Chief Guest, Lieutenant General Gurmit Singh Ji, Governor of Uttarakhand and visitor of our university, to deliver the convocation address. जय हिंद। आज सचमुच एक त्योहार, एक पर्व, एक पारिवारिक खुशी का क्षण लग रहा है। जिस प्रकार से भव्य तरीके से इसको सजाया गया है और जिस प्रकार विजय जी ने मंच के पंज प्यारों का जो रूप देकर कहा है कि ये पूरा परिवार आप सबकी विजय को सेलिब्रेट करने के किया है, अपने आप में बिल्कुल अलग ही समय है। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि स्वामी राम जी के इस मंदिर, इस विद्या के मंदिर के अंदर में आने का सौभाग्य मिला है। आज तो अद्भुत ही है, देयर इज समथिंग डिफरेंट। जब सबसे पहले मैंने एंटर किया तो जो वॉल ऑफ फेम है उसमें 21 परमवीर चक्रों को सम्मान, श्रद्धांजलि और ट्रिब्यूट दिए, और उस 21 में पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड का है। और जब मैं 21 महायोद्धाओं को नमन कर रहा था तो जहन में आया कि आज तारीख भी 21 है। आपने कहा कि मैं पहली बार यहां आया हूं, लेकिन मुझे तो लगता है मैं न जाने कितनी बार आया हूं, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, देहरादून में आ रहे हैं, जॉली ग्रांट में आ रहे हैं, आपको इस मंदिर के ऊपर से जाना ही पड़ेगा। इस 200 एकड़ में कुछ अलग है। अगर आप आत्मा के स्तर पर इसको फील करेंगे, I can feel the divinity here. I can feel the bhavyata here. I can feel
वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो सोच की एक बहुत बड़ापन, आई कैन फील दैट वाइब्रेशन। इसकी जो नींव स्वामी राम जी ने यहां रखी है अपने आप में इतनी विशाल है कि 3 दशक के बाद में भी उसी दिव्यता भव्यता से कार्य किया जा रहा है। आज की जो चांसलर साहब ने ओथ दिलाई थी उसके अंदर में 3 बार ह्यूमैनिटी वर्ड आना और उनके शब्दों में प्यार, लव का जिक्र करना, ये आमतौर किसी भी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का नहीं होता है, जहां पर मानवता, जहां प्यार, जहां सेवा, जहां कल्याण को वो प्राथमिकता दी जाए, ऐसा हर एक जगह नहीं होता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि आपको ये मौका मिला है। मैं आज आप सबको 643 अवार्ड मिले हैं। अगर आप 6, 4 और 3 को मिलाएंगे तो 13 बनता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं सब कुछ तेरा, सर्वदा भला। ये वही डिविनिटी है जो सब छोटी छोटी बारीक चीजों को नजर में रखती है। आज का जो सबसे अद्भुत बात हुई है वो ये है कि 15 मेडल दिए, 15 पीएचडी सब मिलाकर 15, लेकिन उसमें 14 हमारी बेटियां। जोर से ताली बजाइए। आप जो क्रांति देख रहे हैं, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो बिल्कुल अद्भुत है। किसी भी ऐसे सम्मेलन में एकदम स्वीपिंग विक्ट्री बाय हमारी बेटियां, आई थिंक लेट्स क्लैप फॉर देम। हमारे उत्तराखंड के अंदर में 35 यूनिवर्सिटी हैं, 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज और बाकी सेल्फ फाइनेंस्ड। मैं जहां भी जाता हूं तो देखता हूं कि 60 to 70% अवार्ड, मेडल, पीएचडी गोज टू हमारी बेटियां। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जाता हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो देखता हूं कि किस प्रकार हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटियां एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रांति ला रही है। I think this is a change that we are witnessing and I'm very proud about this. कभी-कभी मैं सोचता हूं जब अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई थी तो उन्होंने भगवान को नाम दिया GOD, जी के बाद में ओ लगाया। तो भगवान ने कहा, मुझे मालूम नहीं है कि अंग्रेज लोगों ने ये गॉड का वर्ड क्यों बनाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद में इंग्लिश का जो भी वर्ड होगा जिसमें ओ सेकंड लेटर होगा उसको मेरी ब्लेसिंग्स है। तो उसमें वुमेन, आज ब्लेसिंग देख ली 15 में से 14। उसने डॉक्टर्स को भी ओ दिया सेकंड उसके ऊपर में, और उसने गवर्नर को भी ओ दिया है। ये जो पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज का दिवस मना रहे हैं दीक्षांत समारोह का, इसके अंदर में मैं आई वुड लाइक टू गिव माय कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरीवन, हर एक छात्र, छात्राएं, फैकल्टी, अभिभावक, फ्रेंड्स, माता पिता, एवरीवन। आई थिंक दिस इज ए कलेक्टिव विक्ट्री फॉर ईच वन ऑफ अस। ये हमारी परिवार का, ये आने वाले समय के लिए ये सबसे बड़ी हम सब के लिए it's achievement for each one of us. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये दिस इज द स्टार्ट, ये आपके लिए शुभ आरंभ है। आज से ये यात्रा का ये तो सिर्फ एक पड़ाव था, इसके बाद में आपका लक्ष्य क्या है
That is what is important. मैं यहां स्वामी जी के बगल में खड़ा होकर बोल रहा हूं और मैं उनकी जो पर्सनालिटी है उसके मुताबिक आपको चलना होगा, क्योंकि उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो सोच है, वो आपने बहुत बार स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी में सुनी होगी। उनकी 3 चीज, जो शिव जी का त्रिशूल होता है, उसी प्रकार 3 चीज उनको आपको गांठ में बांधनी पड़ेंगी। और इसीलिए मैं त्रिशूल का जिक्र कर रहा हूं कि आप भूले नहीं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपके अंदर जो संसार है उसको पहचानिए। आपके अंदर जो संसार है ना, वो उस ब्रह्मांड का, मैक्रोकॉस्म का माइक्रोकॉस्म है। हमारे हर भारतीय की सबसे बड़ी कमजोरी ये है दैट वी डोंट नो व्हाट इज आवर सेल्फ वर्थ। हमको मालूम नहीं है कि हम चीज क्या हैं और प्रभु ने हर भारतीय को क्या ब्लेसिंग दी है। और आपकी जो ब्लेसिंग है वो तो एक्सक्लूसिव है। प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट डिमांड which Swami Ram ji has told each one of us. दूसरा कहा है कि खुश रहो। हमने राजभवन के अंदर में स्वामी राम विश्वविद्यालय को हमने रिक्वेस्ट किया था टू कंडक्ट ए सेमिनार ऑन आर्टफुल लिविंग के ऊपर में, जीवन को कैसे जिया जाए। लेकिन आप जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपके लिए हैप्पीनेस काफी नहीं है। मैं तो स्वामी जी के सोच से आपको कहना चाहता हूं, अडॉप्ट ए प्रिंसिपल ऑफ बीट। ब्रेथ होता है ना, सांस होता है, उसमें आर को काट दीजिए तो रह जाएगा BEATH। बी से बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, ई से बी इन द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। पता नहीं क्यों आई एम इन ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी। और टी से बी इन द स्टेट ऑफ थ्रिल, पता नहीं क्यों मुझको मजा आ रहा है। और एच का हैप्पीनेस। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर में शिक्षा प्राप्त की है, विद्या प्राप्त की है, विजडम प्राप्त की है कि यू आर नॉट द वन टू स्टे इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, बट यू शुड बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस हेयर आफ्टर। I think that is what is needed out of you. और तीसरा, जो त्रिशूल का तीसरा शूल है, जो स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो सेवा है वो सेल्फलेस होनी चाहिए। सब कुछ तेरा, what can you do for others? सेवा, कल्याण और कर्म का मतलब जानिए। आई थिंक इट विल बी अ ट्रिब्यूट टू स्वामी राम जी इफ वी अंडरस्टैंड दिस त्रिशूल। जिस त्रिशूल के अंदर में इनर स्ट्रेंथ, चेयरफुलनेस और औरों के लिए क्या किया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी कभी मैं सोचता हूं जीवन क्या है, तो ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच, विचार और धारणा। आपका सोच क्या है, आपकी दृष्टि क्या है, आपका विचार और धारणा क्या है। यू गॉट टू टेक ए प्लेज विद योर ओन सेल्फ। आपको शपथ जो शब्द होता है उसके अंदर श के बाद में पथ होता है। द वे ऑफ लाइफ दैट यू गॉट टू फॉलो इज कि मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जन के लिए क्या करूं। आई थिंक दिस इज द प्लेज दैट यू गो टू टेक विद योर ओन सेल्फ। आज सच कहूं तो 2 फूड फॉर थॉट यहां से लेके जाना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, और वो ये है कि व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ वर्ड लव, प्यार।
बिन शर्त के प्यार और सेवा का मतलब क्या है. I think in your entire profession, please try to understand what are these two words with which you spend your time out here. मेरे को ऐसा लगता है कि all 643 of you belong to the higher domain of being. आप mediocrity में नहीं हैं, आप सामान्य नहीं हैं, आप normal नहीं हैं. And after today, you are the leader. पूरा समाज, पूरा राष्ट्र आपकी तरफ देख रहा है. You got to lead. Nobody will come and tell you, do this, do that. Be the leader yourself. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वॉक टुवर्ड्स योर डीप पैशंस, वॉक टुवर्ड्स योर डीप स्पेशलाइजेशन. मुझे बहुत खुशी है कि यूनिवर्सिटी ने सुपर स्पेशलाइजेशन शुरू किए हैं. दैट्स द एरिया विच बिलोंग्स टू यू. You have to be the model of positivity, creativity and dynamism. Because आने वाले समय के ऊपर में जो हमारे सामने चैलेंज आएंगे, it'll become difficult to deal with the mediocrity. हमारे पूरे मानवता ने अभी कोविड महामारी से सबक सीखे हैं. कोविड महामारी के बाद में डॉक्टर्स को, नर्स को, पैरामेडिकल को, we don't treat them or we don't look at them like normal doctors. You are the health warriors. आप योद्धा हैं. न जाने किस वक्त में ऐसा ही संकट आएगा. And you have to be prepared for that. आप एक एक्स्ट्रा पैकेज के साथ में जा रहे हैं. जो स्वामी राम जी ने जो आपको एक्स्ट्रा पैकेज दिया है, जिसके अंदर में दिव्यता, भव्यता, जिसके द्वारा आपके पास में जो भी पेशेंट आएगा वो भगवान का रूप लेके आएगा. ऐसा ना हो कि भगवान का रूप लेके पेशेंट आया है एंड यू डोंट हैव द पेशेंस ऑफ लिसनिंग टू हिम. ऐसा कभी कभी लगता है. गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, सुनिए दुख पाप का नाश. सुनने से दुख और पाप का नाश होता है. लेकिन जीवन में बहुत डॉक्टर देखे हैं, आप अभी अंदर में आके नमस्ते भी नहीं बोला है, पहले ही आरएक्स के नीचे एक दो दवाइयां लिख देते हैं. और देखिए ये जो वर्ड है नर्स, NURSE, इसमें प्रभु ने जानबूझ के URS लिखा है. यूअर्स, आपकी हूं मैं, आपका हूं मैं नर्स. जोर से ताली बजाइए. ये जो प्रभु ने आपको इस जीवन में नर्सिंग का काम दिया है, ये प्रभु के, ये स्वामी जी के आदेश से दिया गया है. सो यू आर ऑन द डिवाइन पाथ. दिस यू मस्ट रियलाइज. एक मैं स्वामी जी की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं. अगर आप स्वामी जी की किताबें पढ़ेंगे, जो उनके साथ में रहे थे, मैंने विजय जी से सुना है. I asked him, what are the 3 things you enjoyed the most with Swami ji? पता क्या कहा विजय जी ने? विजय जी ने कहा कि स्वामी जी was in a universal consciousness. He was in a cosmic consciousness. उनकी जो कॉन्शियस लेवल था, that was the level of a ब्रह्मांड. उस लेवल के अंदर में पहले ही पता लग जाता है कि कौन मेरे पास में आ रहा है, क्या कहने वाला है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके दुख क्या है, उसका समाधान क्या है. आपने चाणक्य सीरियल टीवी में तो देखा होगा. चाणक्य जी बैठे हुए हैं ध्यान में और कोई दरवाजे से अंदर आता है, बिना आंखें खोले कह देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये है, उसका समाधान ये है. मैं तो कहूंगा कि प्लीज एंडेवर टू बी इन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. अगर आपको प्रभु ने ये मौका दिया है
कि आप इस मंदिर से आपने विद्या ग्रहण की है, तो आपका मकसद होना चाहिए टू बी अलाइंड विद द कॉस्मोस, ब्रह्मांड के साथ में, अलाइंड विद द यूनिवर्सैलिटी, अलाइंड विद मानवता। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये जो 643 आज 13 आप यहां से जो विद्या ग्रहण करने के बाद जा रहे हैं, यू आर नॉट द मीडियोकर अचीवर। आपको एक अलग ही स्तर के लिए तैयार किया गया है, एंड यू मस्ट लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड। कभी कभी ऐसा लगता है कि गणेश जी से सीखने का दिल करता है। श्री गणेश जी से ऐसा लगता है कि इनकी सूंड इतनी लंबी है, लेकिन सीखने वाली बात यह है, ही इज एबल टू स्मेल द फारदेस्ट। कभी कभी लगता है कि ऐसी आंखें छोटी छोटी हैं, लेकिन जमीन के ऊपर में सुई को देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है इतने बड़े कान हैं, किसी की भी तकलीफ है, बात है, एकदम सुन लेते हैं। वो एक बैठे हुए हैं इतना बड़ा शरीर लेकर, लेकिन एक चूहा मोदक खा रहा है उनके पैर के पास में, वो भी पेशेंस है, वो भी कि बाकियों को भी खाने दो। Learn from Lord Ganesh ji the ability to see, ability to hear, ability to feel, ability to see the inner। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पास में जो भी पेशेंट इस जीवन में आएगा, आपके पास में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम को बिना बताए देख सके। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचे दर्जे की है, क्योंकि जो मेरे को इनपुट मिलती रही है, जिस प्रकार से आपका हॉस्पिटल है, जिस श्रद्धा से आप अपने पेशेंट्स को देखते हैं, जिस मानवता से आप देखते हैं, जिस प्रिंसिपल सिद्धांतों के ऊपर में आप चल रहे हैं, we expect very big things from you। अभी तक तो मैं आत्मा ही से बोल रहा था, अभी तक स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था। तो स्क्रिप्ट से भी कुछ पढ़ना अनिवार्य है। मेरे प्यारे छात्रों, स्क्रिप्ट ऐसे ही बोलता है ना। मेरे प्यारे छात्रों, आज से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। अब तक आप जीवन की यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जीवन आपके सामने कई चुनौतियां लाएगा। इन चुनौतियों को अपने विकास के अवसरों के रूप में देखें। भय और असुरक्षा के भाव अपने मन में ना आने दें। दिस विल नेवर कम। नोइंग यू, दिस विल नेवर हैपन। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। बट आई विल डेफिनेटली अपील टू यू कि आप शिव जी के त्रिशूल की तरफ देखते हुए अपनी 3 क्वालिटीज को इंप्रूव कीजिए। योर विल पावर, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। एक बार मैं कैप्टन था, एडीसी टू जीओसी कर रहा था, तो जनरल साहब ने मेरे को बोला कि गो टू द मिलिट्री हॉस्पिटल एंड डिलीवर दिस मैसेज टू सो एंड सो डॉक्टर। तो मैं गया, तो वो एक कमरे में 5-6 डॉक्टर बैठे थे, आपस में से कुछ डिस्कस कर रहे थे, पर्दा गिरा हुआ था। तो आई थॉट आई विल वेट फॉर देम टू फिनिश द डिस्कशन। तो मैं पर्दे के पास में खड़ा होकर देख रहा था कि कब डिस्कशन खत्म होगा। तो मैं सुन रहा था और वो क्रिप कर रहे थे। उसको इतना पैसा मिल रहा है, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, उसने ऐसे कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए तो डॉक्टर प्रभु है, मेरे लिए तो डॉक्टर से बढ़कर कुछ जिंदगी में नहीं है। क्या इनको भी प्रॉब्लम है? We expect each one of you to be on higher side of money, material, ego, and that false pride. आपको डॉक्टर को प्रभु के रूप से पूरा भारत देखता है। Never forget that. ये कहने के बाद में I'll not read
the script now. लेकिन मुझे बहुत खुशी है जो वाइस चांसलर साहब ने कुछ एक बहुत सुंदर बातें कही थी। एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपने यहाँ बनाया है, लगता है ये हम सब के लिए एक चुनौती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो डायग्नोस्टिक पेस है, हमारा जो मॉनिटरिंग है, हमारी जो सर्वेलेंस है, हम किस प्रकार से हर भारतीय को एजुकेट करें कि एक बॉयल, एक पिंपल, एक छोटा सा रैश शुरू के स्टेज में अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो बाद में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सो आई विल रिक्वेस्ट दैट how to go for preventive medicine, how to go for preemptive medication. कभी कभी बहुत दुख लगता है कि ट्रॉमा सेंटर में नंबर ऑफ फैटेलिटीज दैट वी हैव। मैं एक फौजी रहा हूं और मैं ऐसे सोचता हूं कि कुछ एक मंत्र है। पहला मंत्र है प्लैटिनम 10 minutes when the accident happens or the problem happens. वो पहले 10 मिनट में क्या किया जाए? Please educate wherever you go. Please educate people how to handle first 10 minutes. How to handle the golden hour. मैंने कश्मीर के अंदर में 10 साल काउंटर टेररिज्म की टेन्योर की है और हमारा जो हॉस्पिटल श्रीनगर में है 92 बेस हॉस्पिटल, वहां पर सभी जानते हैं, हर एक फौजी जानता है कि अगर आप गोल्डन आवर पहले घंटे के अंदर में कुछ भी हुआ हो, आपको गोली लगी हो ना एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आप गोल्डन आवर फर्स्ट 1 hour के अंदर में हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, देन चांसेस ऑफ सेवियर इज मच बिगर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम इन सिद्धांतों पे चलेंगे तो 1/3 ऑफ फैटेलिटीज ऑफ ट्रॉमा सेंटर कैन बी रिड्यूस्ड। तो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज कैरी लिटिल मैसेज विद यू वेरेवर यू गो। बहुत खुशी हुई मुझे, आपने जिक्र किया नियोनेटल बोलते हैं, एक आपने बड़ा अच्छा एक आपने एम्बुलेंस सिस्टम बनाया जिसमें जो छोटे बच्चे, यू कॉल इट ए नियोनेटल, नहीं नियोनेटल, उसका नाम इतना प्यारा रखा NICU। मेरे को तो ऐसा लगा जैसे निक्कू होता है ना, घर में बच्चा होता है and it is so effective. It has already produced results. I'm very impressed that you gone in for a stimulation or what you said in reference to the nursing, and it has given you edge everywhere. आपने एक बात की डाइट की। मैं तो जब इस शब्द को देखता हूं ना, डाइट, DIET, तो सिंपल सा है, ये टी को हटा दो तो डाई हो जाता है, आदमी मर जाता है। So you got to be careful. I'll request each one of you to please educate the masses on what to eat, what not to eat, and how to eat in the natural way, the Indian way. आखिर में मैं डॉक्टर विजय दसपाना जी, चांसलर साहब, आपको I would like to compliment you in a big way, because you are not producing only the doctors or the nurses, but you are producing those with a super specialization on humanity, divinity, and spirituality. I think that's where ये वाली जो जगह है, ये जो मंदिर है, this scores as compared to others. जोर से ताली मारिए। मैं इस मंच की दोनों ही फ्लैंक को बहुत बहुत डॉक्टर विजेंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, आप दोनों को बहुत मुबारकबाद देता हूं। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू अप्रिशिएट डॉक्टर शैलेश बेगोली, द सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, दैट it is very important for शासन प्रशासन to ensure that institutes, organizations like Swami Ram
institutes, they're doing an exceptional job. They're doing an outstanding job. They are not into the game of money and cash and those scenarios which usually business enters into. They are into the bigger domain of humanity, divine pleasures, spiritual pleasures. I think there's a big difference. एक चीज और मुझे बहुत प्रभावित की है कि आपने यहां बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है टू असिस्ट द स्टार्टअप प्रोसेसेस. आपका जो ग्रामीण विकास संस्थान है, दैट्स एन एक्सीलेंट थॉट. कभी कभी ऐसा लगता है अंत्योदय जो लास्ट माइल है, लास्ट पर्सन है, लास्ट घर है, उसका हेल्थ केयर का क्या किया जाएगा, दूर दराज इलाकों में क्या होगा. अत्यंत प्रसन्नता है कि आपने जो स्वामी जी की जन्मस्थली है वहां पर आपने संस्थान बनाया है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं. आखिर में एब्सोल्युटली इन द एंड में एक ही बात कहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि एक उत्कृष्ट रचना जो स्वामी राम जी ने की थी, जिसपे आपकी पुस्तक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, आई होप एवरीवन हैज रेड इट. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि ये शुरू में ही 20 लाख से ज्यादा इसकी कॉपीज प्रतियां बिकी थी. ये उसी जो बिक्री की आय थी was the basic investment which was put in for the hospital and for the college. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनकी सोच थी, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था, दूरदर्शी सोच थी, उसी के कारण आज हमको ये दिन, ये सौभाग्य मिला है 21 परमवीर चक्रों को श्रद्धांजलि देना 21 नवंबर के दिन में, और 64313 और उसमें भी मेरी बेटियों ने रिकॉर्ड बनाया है. अंतिम में नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद. Thank you, sir. May I request the Honorable Chancellor of the University to please declare the convocation closed. I declare the 6th convocation of Swami Ram Himalayan University closed. I'll now request all of you to rise for the national anthem.
request everyone to remain standing while the academic procession withdraws. I request all of you to join us for lunch. Special announcement for the recipients. All the recipients are requested to collect their degrees from the stalls, from the respective stalls where you took your stools from, and join us for lunch. After the lunch, you can gather in the open field next to the Convocation Hall for a photo session with Honorable Chancellor and Honorable Vice Chancellor. Thank you.